हे एवरीवन, दिस इज आवर फर्स्ट क्लास और आज हम डिस्कस करेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ डील करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये किस मैनर में ड्राफ्ट किया गया है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो बेसिकली इसके अंदर तीन चीज़ें शामिल हैं जो हमें पढ़नी है। द फर्स्ट वन, अगर हम फर्स्ट वन की बात करते हैं तो फर्स्ट वन आता है प्रीएम्बल, सेकंड वन part, and third one is schedule. So let us now discuss relevant facts related to the Constitution of India. So the first one is making of Constitution of India. Who are responsible for framing of this beautiful Constitution of India? So the credit goes to the Constituent Assembly, which was formed on 9 December 1946. It was temporarily headed by Shri Sachidanand Sinha ji and the permanent head was Dr. Rajendra Prasad. The constitutional advisor was Shri B.N. Rao. Now, under the Constituent Assembly, a drafting committee was formed and it was a committee of 7 members which was headed by Dr. B.R. Ambedkar, Shri Bhim Rao Ambedkar ji. That's why the credit of Constitution of India goes to, the credit of its draft goes to Dr. B.R. Ambedkar, but it was a team of 7 members which includes Dr. B.R. Ambedkar, N. Gopalaswamy Iyengar, A. Krishnaswamy Iyer, Dr. K.M. Munshi, Syed Muhammad Shadullah, B.L. Mittal. But B.L. Mittal was replaced by N. Madhav Rao and D.P. Katyan, which was replaced by Shri T.T. Krishnamachari. They drafted the Constitution of India and it took a time period of, we can say, 2 years, 11 months and 18 days. Now, another relevant fact about the Constitution of India is its enforcement. Constitution enforcement date है 26 November 1949, but on the same date it was also commenced partly. इसका कुछ हिस्सा partly commence हुआ था. So first date of its commencement is 26th day of November 1949 and it was completely come into force on 26th January 1950, which is also known as Republic Day. Another relevant fact about the Constitution of India is till date it has been amended 105 times. Now we have list of abbreviation used. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बैरक में जहां कहीं भी एब्रीवेशंस का यूज है वो सभी यहाँ पर गिवन है, जैसे ART और ARTS stands for article and articles. In the same way, CL stands for clause and CLS for clauses, CO for constitutional order, INS for inserted, PT for part, REP for repealed, SS for section, SCH dot for schedule. In the same way, the important are WEF with effect from and WREF with retrospective effect from. Now, as we discussed कि constitution के कुछ important elements हैं and parts are the most important one. हम parts को further categorize कर सकते हैं
पार्ट विद चैप्टर्स, मतलब कुछ पार्ट ऐसे हैं जिनके अंदर चैप्टर्स गिवन है और कुछ पार्ट ऐसे हैं जहां हमें चैप्टर्स नहीं दिए गए हैं. सो दे आर 16 in numbers. Such are 16 in numbers, and with chapters we have 6 chapters, 6 parts, sorry. Okay, so now let's see. Part 5, in part 5 we have 5 chapters. In part 6 we have 6 chapters. In part 11 we have 2 chapters. In part 12 we have 4 chapters. In part 14 we have 2 chapters, and in part 17 we have 4 chapters. It is just an overview, so हमें इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है. We just हमारे पास सिर्फ इतना आइडिया होना चाहिए कि देयर आर 6 पार्ट्स जिसके अंदर चैप्टर वाइज कैटेगराइजेशन गिवन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, एंड दे आर 5, 6, 11, 12, 14 and 17. पार्ट 1 इज द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, जिसकी रेंज है फ्रॉम आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4. सिमिलरली सेकेंड पार्ट है सिटीजनशिप और इसकी रेंज है आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11. पार्ट थर्ड है फंडामेंटल राइट्स और इसकी रेंज है आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35. पार्ट फोर्थ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और इसकी रेंज है आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51. देन वी हैव पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसके अंदर सिर्फ एक आर्टिकल शामिल है, आर्टिकल 51A. पार्ट 14A जो है फंडामेंटल ड्यूटीज और इसके अंदर सिर्फ एक आर्टिकल शामिल है, दैट इज आर्टिकल 51A. जो मेन इम्पोर्टेंट बात है यहाँ दैट इज कि वी हैव 11 ड्यूटीज इन टोटल. पार्ट 5 is the union and its range is from article 52 to article 151. Part 6 is states and its range है article 152 to article 237. Then we have part 7 जो omitted है, इसके अंदर सिर्फ एक आर्टिकल शामिल था, that is article 238. Part 8 is the union territories, इसकी रेंज है फ्रॉम आर्टिकल 239 टू आर्टिकल 242. आर्टिकल 242 omitted है. Then we have part 9 that is the पंचायत और इसकी रेंज है आर्टिकल 243 टू आर्टिकल 243O. It is alphabetic O. Then we have part 9A that is the municipalities, इसकी रेंज है आर्टिकल 243P to 243ZG. Then we have part 9B, इसकी रेंज है आर्टिकल 243ZH to आर्टिकल 243ZT. Then we have part 10 that is the scheduled area and tribal areas, इसकी रेंज है आर्टिकल 244 to 244A. सिर्फ दो ही आर्टिकल्स हैं पार्ट 10 में. Then we have part 11 relations between the union and the states, इसकी रेंज है from article 245 to article 263. Then we have part 12 finance, property, contracts and suits, इसकी रेंज है article 264 to article 300A. Then we have part 13 trade, commerce and intercourse within the territory of India, इसकी रेंज है article 301 to article 307. Then we have part 14 services under the union and the states, इसकी रेंज है article 308 to article 323.
Then we have पार्ट 14A, that is ट्रिब्यूनल्स. इसके अंदर दो ही आर्टिकल इंक्लूडेड है, आर्टिकल 323A एंड आर्टिकल 323B. Then we have part 15, that is elections, और इसकी रेंज है आर्टिकल 324 to आर्टिकल 329. Then we have part 16, special provisions relating to certain classes, और इसके अंदर we have range of article 330 to article 342A. Then we have part 17, official language, और इसकी रेंज है आर्टिकल 343 to article 351. Then we have part 18, emergency provisions, और इसकी रेंज है आर्टिकल 352 to article 360. Then we have part 19, miscellaneous, इसकी रेंज है आर्टिकल 361 to article 367. Then we have part 20, amendment of the constitution, इसके अंदर सिर्फ एक आर्टिकल इंक्लूडेड है, that is article 368. part 21, temporary, transitional and special provisions, इसकी रेंज आर्टिकल 369 to article 392. And at last we have part 22, short title, commencement, authoritative text in Hindi and repeals. इनकी रेंज है आर्टिकल 393 to article 395. Then we have schedules, and there are 12 schedules till today that we have. To learn the schedules, we have a trick which is tiers of old PM. Here T stands for territory, E stands for earnings, A stands for affirmation, R stands for Rajya Sabha, S stands for SC/ST areas, O stands for other states, F stands for federalism, that is 3 list, O stands for official language, L stands for land reforms, D stands for defection law, P stands for panchayat, and M stands for municipalities.